फहमीदा कमल साहिबा पूछ रही हैं, सर 40 की स्पीड हो तो लाइट पर स्लोली स्पीड कर सकते हैं, लाइट चेंज हो जाती है वन दम से एकदम से। ओके, जब आप स्पीड कर रहे होते हैं और अगर आपको पता है कि आगे ट्रैफिक लाइटें आ रही हैं और रोड की जो स्पीड है वो 40 है, तो ओब्वियसली आपको पहले से देख लेना चाहिए दूर से, इसलिए तो कहते हैं कि प्लानिंग अहेड किया करें। तो दूर से देखें, अगर आप जा रहे हैं और वो ग्रीन है तो वो ग्रीन कितने देर के लिए रहेगी, वो 40-50 सेकंड्स के लिए ग्रीन होगी, उसके बाद वो अंबर और फिर रेड हो जाएगी। तो अब आप दूर हो और आपको पता है कि बाय द टाइम मैं उसके पास पहुंचूंगी तो वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो आप रिड्यूस करना शुरू हो जाए, स्पीड को ग्रेजुअली स्लो करना शुरू हो जाए। तो अगर आप 40 मतलब स्पीड 40 है तो ज़रा 40 तो नहीं कर रहे होंगे आप, तकरीबन 35 कर रहे होंगे, तो 35 से उसको ग्रेजुअली नीचे लेके आना शुरू हो जाए 25 की तरफ। ओके, और कभी भी देखो हमारे एशियंस में जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को, घर वालों को देखते रहते हैं कि वो जंप करते हैं रेड लाइटों को। ये सबको प्रॉब्लम है, ये इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मी माई सेल्फ, हमारे सबका ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, जंप करने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि इससे पहले पहले हम निकल जाएं। ये नहीं कि हम वहाँ रुक गए तो कौन सी कीमत आने वाली है, 1 मिनट की तो बात है सारी, ठीक हो गया। तो अगर वो रेड कलर है, आप जा रहे हो और वो रेड कलर है, तो फिर तो आपको रुकना ही रुकना है, लेकिन फिर भी अपने आप को रेडी रखो। हो सकता है बाय द टाइम आप उसके करीब पहुंचे और आपकी स्पीड 10-15 हो और वो चेंज हो जाए कलर, तो फिर आप आराम से चलते रहो, रुकने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर वो ग्रीन है, फिर भी अपने आप को तैयार रखो कि मुझे वहां रुकना है, ठीक हो गया। जब रुकने के एटीट्यूड, रुकने के मतलब हिसाब से, या जिसको एक उर्दू का कोई खास लफ्ज होगा कि रुकने की नीयत से बेसिकली आप जाओगे ना, तो आप कभी भी रेड लाइटों को क्रॉस नहीं करोगे। जब आपकी नीयत ही ऐसी होगी कि मैंने इसको छलांग लगा के निकलना है, तो फिर रेड लाइटें आप क्रॉस कर जाते हो। तो अगर 40 की स्पीड में ट्रैफिक लाइटें लगी हो तो वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो आप क्या करो, दूर से स्पीड को रिड्यूस करना शुरू हो जाओ। एग्जामिनर को पता है कि आप स्पीड क्यों कम कर रहे हो, ठीक है। तो ग्रेजुअली इसको कम करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब आप उसके पास आओ, अगर वो कलर चेंज हो गया तो रुक जाओ, नहीं चेंज हुआ तो फिर उसी 20-22 की स्पीड से निकल जाओ और फिर आगे जाके उसको दोबारा से बढ़ाना शुरू कर लो। डू यू अंडरस्टैंड? कभी भी ऐसे नियत मत रखो कि मैंने ट्रैफिक लाइटों को फटाफट से निकलना है, क्योंकि फटाफट से निकल के आपको मिलना क्या है एग्जाम में, आपको तो टाइम कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पूरा नहीं होगा तो वो आपको रूट करवाते रहेंगे। मतलब उनको 35 मिनट्स उनके लिए रिटर्न है कि उन्होंने आपको 35 मिनट्स गाड़ी चलवानी है मिनिमम। ओके, तो 35 मिनट्स आपने गाड़ी चलानी है। अगर आप जल्दी रूट कर भी लोगे तो फिर आपको 2-3 साइड वाली टेस्ट सेंटर के जो आसपास की रोड है तो उन पे वो घुमाएंगे आपको, तो वहां पर भी गलती हो सकती है। हाउ टू बिकम ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, फहमीदा कमल, यस सर। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए यू नीड पास 3 टेस्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। Okay, part 1 is a theory test, part 2 is a practical test, and part 3 is the instructor test. You have to teach someone and the examiner will sit on the back. If you go on the DVSA website, there's a lot of information available. Go type in Google and you'll get all that information. If you still have a problem, you can message me and I can give you more information. It's a lengthy process. Currently, it takes about 1 year, good 1 year to become a driving instructor. And या और उसको चेक कर लें, फिर उसके बाद वो प्रोसेस शुरू कर लें। थ्योरी टेस्ट पहले करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल, फिर जाके वो आपको पार्ट 3 करना पड़ेगा, फिर जब आप जाके आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनोगे। But I have a question. Is it considered a mistake if driver's side tire came on mini roundabout? No, it's not. Mini roundabout, all mini roundabouts are not same. Some mini roundabouts are very small, some are a bit of large, some are a bit more larger than that. Okay, as long as you are not going over the mini roundabout. Yeah, if your right tire or back right tire is touching a little bit the painting of that mini roundabout, you are perfectly fine. You don't need to worry about that. You do not need to go all the way to the left side as well, because mini roundabout, if you go more on the left side, sometimes you end up hitting the curb. Maybe sometimes there is a car on the left side as well. So make sure if you're going around the mini roundabout, there is always a arrow around on, it is painted. Okay, it's a print. If it's a print, there's always arrow mark, and then middle ring, the paint. You should keep your tire in between those two, paint and the arrows. You'll be fine. Even if you touch that middle part, doesn't really matter. But do not go over the mini roundabout. That's a failure. Little bit touching is another issue. Okay,
can I do first two part of driving instructor without any help or teaching lesson? Yes, you can do that. You don't need any help in part one and part two. Okay, but part three you need a good trainer because part three is a bit of difficult and a bit of expensive as well. Okay, so you need to spend a bit of money on the part three, and what do you call? Yeah, part one. You can get yourself ready for the part one. After your DBS check, DBS will issue you a number, specific number, and then do the part one preparation and do exam. Once you passed it, then you go for the part two. Part two, you might need a couple of lessons anyway because you're an experienced driver, and then after that, you need a good trainer for part three. Yeah, so part one and part two you can do yourself, but part three you need maybe at a company or maybe private trainer. Okay. Mean. No, I am not from Birmingham. I'm from Milton Keynes. For part two, can use my own car. Is it necessary that the car should be dual control for part two? No, the car shouldn't be dual control for the part two. Part one and part two, you don't need a dual control. Part one obviously is a theory test. For part two, you don't need a dual control. You can do in your own car as well, as long as the car is roadworthy. वेस्ट विकम में कोई आपके जानने वाला इंस्ट्रक्टर है? शाकिर, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनीबॉडी इन दैट साइड. Examiner TVLA UK. Brother. Yes, brother. Yes, Sadia. Part 2 is always on hold nowadays. You wouldn't get any date for the part 2. So you have to call to the DVSA and they will put you on hold, and soon any availability comes up, they will call you. You got to be ready for that, and if they give you any date, any time, anywhere, just go and do it. There's so many people who are trying to become a driving instructor, so that's why there are no dates available for the part 2. Like lesson learned and teaching support. Thank you very much. Sunny has been Birmingham. After passing part 1 and part 2, is there any time frame that we have to complete part 3? Yes, within 2 years you have to do your part 3. From the day you pass the theory test, from that day it starts, and within 2 years you have to complete your part 3 as well. My test pass 44. Well done.
बाबर सिद्दीक मीरपुर आई नीड टेस्ट डेट ओ भाई जी टेस्ट डेटा कोई लभनी पियां कुसै पासा भी कुतू टेस्ट डेट क्या कर सो चेक करने रो कुदरे कुदरे लभी असी ने so that mean I have to do preparation first then book test on hold. Yes, you can take few lesson for the part 2 and they will put you on hold, but normally it takes about month, 2 months, 3 months, sometimes 4 months, depends. So you can put it on hold and take lesson, maybe one lesson a week. You might need about 10 hours. Take 4 5 lesson, basically 2 hours lesson should be enough for you, because they your instructor might take you around that area where they're going to do the part 2 lesson, part 2 test. आप कहाँ से हैं भाई? मैं जनाब मन कोटली से हूँ जनाब, आज़ाद कश्मीर से हूँ. यू वेलकम. थैंक्स सादिया. गुड लक with your part 2 and part 1 as well. Hello. UK बर्मिंगम, सॉरी मिल्टन कीन्स से हूँ यार. माय बैड, बस ऊपर बर्मिंगम वाले बहुत है तो मैं भी बर्मिंगम चला गया हूँ. Yeah, I am from मिल्टन कीन्स. Oh, that's very good. Hazard 71, well done. Okay, so you pass your part 1 to part 2. Yes, take few lessons, I would say around 10 hours minimum. Do 10 hours and do the test in your own car, no problem with that. So you have practical test booked in January. You should start taking lessons soon as possible. If you take one lesson a week, obviously it's going to take you around 4 5 months to get yourself ready for the test. ईसा सलाम चौधरी जी. वालेकुम सलाम सर. मैं चौधरी नहीं हूँ, आई एम राजा. हाल ठीक ठाक है भाई साहब. ये गल ठीक है बस सही है जी. चौधरी आहो या राजा आहो, डजंट मैटर, इट्स नॉट बिग डील. पाकिस्तान किधर से हैं? पाकिस्तान कोटली से हैं जी, आज़ाद कश्मीर से. और सुनाओ, और की सुनाओ जनाब? ठीक ठाक, फिट फैट. कोटली कड़ी जगह ने, ओ कोटली सरसावे ने हो भाई जी. असा मिल्टन कीन्स करवाने हैं जी. तुस भी अपना तारफ कराई छोड़ो जो पर्सनल गल्लां पुच्छने भी होता है. हाय 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 हाय.
अच्छा जी, फिर क्या स्टोरी है कि तुमने क्वेश्चन ये ख़त्म, असां भी कमें की करम बंद। सरकार ना गवर्नमेंट साढ़े को सी ते ना तुसां को सी असां दोए ला रहे ने हाँ। गवर्नमेंट जिन्हों को थे सी उन्हों को लिया है, उला भी उन्हों को से ते हिला भी उन्हों को लिया है। डेट लोगों के पास वहम आ कि गवर्नमेंट साढ़े को है तो गवर्नमेंट उन्हों को है, जिन्हों को थे उन्हों को लिया है। सलाम ब्रदर, आज आपको लाइव देख रहा हूँ, आपके वीडियो वन ऑफ बेस्ट होती हैं, थैंक यू। ओह, आप आपका नाम नहीं मुझे पता, सी लिखा हुआ है। यू वेलकम माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन। पास प्लस ड्राइविंग लूटन, सलाम हजरत। वालेकुम अस्सलाम हजरत, की हाल है? पास प्लस इधर मैं मना कर रहा हूँ लोगों को, पास प्लस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इधर आपने नाम ही पास प्लस रख लिया। लोकेशन मिल्टन किन से हूँ मेरे भाई, पुलिस नहीं भेज देना मेरे ऊपर। ना ना ना, कोई मसला नहीं। सुनाओ, सेहत भी ठीक ठाक है। और यार वो बंदे ऊपर पूछ रहे हैं कि पास प्लस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैंने कहा अभी छोड़ो पास प्लस को, टेस्ट से पास कर लो, क्योंकि अब इंश्योरेंस वाले तो डिस्काउंट नहीं देते पास प्लस का। अब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ऐसा ही था, तो क्या वो पास प्लस के कोई दे रहे हैं आपको, कोई डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स को या नहीं, नए जो लर्नर होते हैं, नए पास आउट करने वाले? हाँ देखा ना, पास प्लस का कोई फायदा नहीं है। हाँ मेरा भी यही इन्फॉर्मेशन थी कि उसका कोई फायदा नहीं है, मैंने मना किया उनको। बस सूखा पुखा टेस्ट पास कर लें जी, वही काफी है। सरकार मेरा नंबर मेरी ऊपर वो देखें जो आईडी बनी हुई है, इसके ऊपर जो डीपी लगी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ जी, यही मेरा नंबर है जी, पिछले 20-25 साल से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने नंबर ना दो रखे हैं ना इस्तेमाल करता हूँ कोई और नंबर, सिर्फ यही एक नंबर है। इसी के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, टाइम मिला तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, ज़्यादा तंग मत करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ज़्यादा फायदा आपको है तो फिर अच्छी बात है मेरे भाई, पास प्लस करवाते जाएं फिर। कितने पैसे लेते हैं पास प्लस के? मैं भी सोच रहा हूँ शुरू कर लूँ, कि किसी दिन लंबा ट्रिप करने का दिल हो तो बस स्टूडेंट को बोलूँगी यहाँ से गाड़ी निकाले, लंदन का सैर करके एक बार मैनचेस्टर की सैर के लिए निकल जाएं। बेस्ट थ्योरी ऐप बता दें, सारी थ्योरी ऐप्स एक जैसी हैं, जो सबसे सस्ती है वो डाउनलोड करें, सबसे सस्ती वाली तो उसी के ऊपर तैयारी करें, ये सबके क्वेश्चन सेम ही हैं, ये कोई बेस्ट नहीं है इसमें। और मॉक टेस्ट करें, आप उस गूगल के ऊपर जाएं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, और फिर मॉक टेस्ट जितने करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो थ्योरी टेस्ट की सारी ऐप्स एक जितनी हैं, ऐसी हैं। सो उसी के 750 क्वेश्चन हैं, वो बार बार वो उनको पूछ रहे हैं आपसे। कोई नहीं, सामने लेके क्या बने हो, चलो ठीक है, राम करो साड़ी दिहाड़ी ने, थके भी हो। और तारफ नहीं तुसा कराया था, मैं असल तुसा की थकावट में एहसास ज़्यादा है, तारफ कराते जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर टेस्ट बुक नहीं हो रहा, डेट नहीं मिलती, मैं आज छुट्टी पे था यार, मैं जब छुट्टी पे होता हूँ, जिस दिन कोई लेसन नहीं करता उस दिन मैं आता हूँ लाइव पे। हाँ मैं रेस्ट कर रहा था। टेस्ट बुक नहीं हो रहा, डेट नहीं मिल रही यार, ठीक बता दें। टेस्ट का भाई डेटों का बहुत इशू जा रहा है जनाब। अच्छा अच्छा, हाँ सेंसर है, फिर अपने बंदे हो ना जी, फिर से मतलब सारी मुलाकात हुई उस दिन, उनसे ज़रा तारफ नहीं कराया, लेकिन उन पहचान नहीं होना था, पिक्चर बहुत छोटा जाया। सेंसर अपना है ना जी, फिर वो काल का है ना थोड़ा। टेस्ट डेट जो है ना वो अभी कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं, वो डेटें आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगी, अभी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। एंड इंशाल्लाह बेहतर होगा।
उम्मीद यही है कि 1-2 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कोई क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है जी, सब ऐपों के एक ही जैसे क्वेश्चन है। वही थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज चूंज करके ना डाले हुए हैं। वो तकरीबन 600-700 क्वेश्चन है टोटल, उन्हीं को घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं। एक कोई भी एक ऐप डाउनलोड करें, उसकी तैयारी सही से करें, पास हो जाएंगे। अभी कुछ वो क्वेश्चन कह रहे हैं कुछ ऐड करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने किए नहीं है। वो डीबीएसए वाले जब करेंगे तो आपको बताएंगे। चलो फिर तुम दो आइडिया पर अच्छे से गप हो सी यार, एवं था ना कोई नवा कम खोली मारिया। चिट्टा भी तो इतना काला भी तो रोला गुम दो ना बया मारे भरारो। मैं इधर जनाब को लोगों ने हेल्प मदद मदद कर रहे हो। सही 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 समझिए आप। तो नेकी भी कर दियो भाई, सारी जिंदगी जनाब पैसे ने पीछे पे रहे हो, तो हुकूमत ने पीछे पे रहे हो, ऐ तो मैं नेकी ने काम कर लोगों फ्री, फ्री मशवरे देना है। हाँ, से ज़्यादा आपकी वीडियो, शायद आप प्रवीण साहबा कह रहे हैं कि आपकी वीडियो से बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। थैंक यू वेरी मच जी, वीडियो देखते रहें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछा करें वीडियोस के नीचे, मैं उनके जवाब दे देता हूँ जब कभी उनको टाइम मिलता है। तो वीडियो देखते रहें और इन्जॉय करें, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखें, दुआएं देते रहें, दुआओं से बड़ा काम बनता है जी। मेरी वीडियो आपके घर में चलती है पूरा दिन। ठीक हो गया ना फिर। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। मेरी बहन दुआ करते रहें, वीडियो देखें और दुआ करते रहें अपने लिए और मेरे लिए भी, अल्लाह आपको पास करे। मिस्टर एम के, डू यू सी मी इन योर स्क्रीन? नो, आई कांट सी यू माय फ्रेंड। Yes, I can do the mock test. Can you please text me on my WhatsApp? I got number on the DP. You can please text me, eh? इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे जी, इंशाल्लाह। कौन सा टेस्ट सेंटर है आपका? सरदार साहब जब इतने रोले तुसाने कमरे तुसन अच्छो तो खंगो तो लंगो। इतना एक बार भाई साहब भी आए थे इधर प्रेसेंस से आए तो उन्हें मैं खंगो तो लंगो, तो जनाब तुसा भी खंगो तो लंगो। भाई जब्बर वाले जागने सुनते उन्होंने जाता लाओ मल्ली। All right, all right, all right, all right. ओके ओके, तो शायद जी आप ब्लैचली में हो तो वीडियो देखते हो जी आप, बहुत अच्छे। तो ब्लैचली के जो हॉट स्पॉट्स और मेरे दोस्त आए मतलब वो डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं दूसरी लाइव पे। एनीवे, तो शायद जी आप जो है ना, क्या नाम है, खास करके जो मैं हॉट स्पॉट्स की वीडियो बनाता हूँ, जो मैं बताता हूँ कि ये हॉट स्पॉट्स हैं यहाँ पर फेदिर के ज़्यादा चांस है, उनको अच्छे से देखें, उनके नोट्स बना लें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बस बता। अच्छा अच्छा, वो मेरी वीडियो देखती थी एक बहन, कहीं पता नहीं उधर साउथ हैम्पटन से, वो कहाँ से ना, वो रेगुलरली देखा करती थी, तो वो कह रही है कि वो मुझे कह रही है कि मैं सोच रही हूँ अब ब्लैचली में ही आ जाऊँ टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि मैंने आपकी कोई वीडियो कोई रूट नहीं छोड़ा, मैंने सारे रूट को तकरीबन 2-2 3-3 बार देखे हुए हैं, वो रट्टा हो गया मुझे। मैंने कहा क्या मसला है, डेट ढूंढे और आ जाए यहाँ पर टेस्ट दे दें, क्या मसला है। सही 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 सही। सरदार साहब लाइसेंस बन जाएगा आपका वलायती, आप अभी जो आपके पास लाइसेंस है वही रखें, अल्लाह अल्लाह करें, और
जो रोजगार लगा हुआ उसी को लगा के रखें। इधर बहुत हालात खराब है। इधर पहले ही बंदों के टेस्ट पास नहीं हो रहे। Mighty, I am from Milton Keynes. और जनाब मैं थोड़ी देर के लिए हूँ यहाँ पर, एक टिप दें। टिप्स तो बहुत दिए ना जी। टिप आपको क्या चाहिए? देखो अब जो आपका रोमन राउंड अबाउट है और आइकिया राउंड अबाउट है वो ठीक कर लें आप ना। रेड मूर और चलो जी फिर अल्लाह ने वाला है। ओके जी सरदार साहब अल्लाह ने वाला है, जाओ एंजॉय करो। तो नींद्र फंडो तो इंशाल्लाह फिर कापोसी हैं। फिर जो ऐसा दुबे पास लाइव तो फिर कापो छपोसी। सॉरी शायदा। तो बेसिकली रोमन आइकिया राउंड अबाउट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड उसके बाद रेड मूर राउंड अबाउट, कैली किचन राउंड अबाउट जैसे आपको पता है। और याद रखें कि वो सिम्पसन वाली जो रोड है उन्होंने चेंज कर दी है। वो चूंकि मैंने वीडियो जो बनाया था वो पहले 70 की स्पीड था, वो 40 की स्पीड उन्होंने कर दिया। वहाँ पर वो एक तरफ से जंक्शन भी बंद कर दिया उन्होंने। तो वहाँ की उसकी प्रैक्टिस उसी कर लें आप। मुझे नहीं पता कि आपके इंस्ट्रक्टर कौन है, पर जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ बात करें, वो उनको पता होगा। वहाँ पर स्पीड में काफ़ी बंदे फंस रहे हैं आजकल। जो ही आप निकलते हो ना ग्रूव वे के ऊपर H9 की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ, वापस ब्लैची की तरफ जब आप वापस आते हो सिम्पसन से, तो वो आप जो है ना उसको 40 उन्होंने कर दिया है। हाँ, क्योंकि वो पहले 70 हुआ करता था। अभी मैंने रिसेंटली एक और वीडियो भी बनाई, लेकिन पुरानी वीडियो में वो 70 स्पीड थी। तो वहाँ पर जो है ना काफ़ी लोग फंस रहे हैं आजकल। वो कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्पसन सॉरी अपना फेनी स्ट्रैटफोर्ड का जो डबल राउंड अबाउट है ना, वो भी अच्छे से करें। क्योंकि वो इतना मुश्किल मुश्किल मतलब वो रोमन की तरह वो भी मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसका जो है ना चारों तरफ से उसको करने की बार बार कोशिश करें, जो उसमें आपके पास टाइम नहीं बचता। आपके पास लाइक रिएक्शन का टाइम बहुत कम होता है। सामने से जो गाड़ियाँ आती है ना, तो बंदा अगर कॉन्फिडेंट ना हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी तो मिलिट्री की में आपको पता है फास्ट रोडें हैं, राउंड अबाउट आप सीख चुके होंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। Brother, I have already answered your question. You need to message me on my WhatsApp, and then I can book a mock test with you. It's long time ago. मैंने part 1 किया था, to be honest. I can't remember exactly which app was that, but I have downloaded two. One DVSA official app, and there was another one. I can't remember exactly. Um, so I had done both of them. They were about £4-5 each. वो दोनों आप DVSA के तो लाजमी आप डाउनलोड करें, चाहे उससे क्वेश्चन हो या ना हो। डाउनलोड द DVSA official one, and at the same time there was another one I downloaded. That was about £4-5 as well. So keep doing that, and keep doing the mock tests as well for the part 1. जब मैं पास हुई आपको कॉल करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कॉल ना भी करें लेकिन दुआ कर दिया करें जनाब, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। क्यों पास नहीं होंगे जी? कौन सा टेस्ट कौन सा मुश्किल है? इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसे ऐसे नैले बंदे वहाँ जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ओके। No, sorry, I am not based in Hounslow. I'm based in Milton Keynes. Manail. Nice name.
No, Manil, I'm not available in Hounslow. I'm in Milton Keynes. If you're in Milton Keynes, I can do the lesson with you. Okay. Thank you very much. Keep watching the videos and keep sharing them, please. You're welcome. Yeah, I am trying my best, Minail. So you have test in October and struggling with your reverse. With reverse mean what? Reverse bay parking, reverse parallel parking, or reverse on other side of the road. Reverse bay parking. Okay, it's very easy. I thought maybe you are struggling with parallel parking. Okay, so there's so many methods to do the reverse bay parking. The easiest method I found and which I teach to my students is, if I don't know how your teacher taught you, but if you are in, I mean, obviously, first of all, you straighten your wheel, okay, and front of the bay you wanna park, give that bay number one. If you go on my YouTube, there's a video for that as well. So I made that video. It's very easy if you do this way. So give that bay. Don't count the lines. You know, some of the instructors they ask you to count the lines. If you counting the lines, sometimes you forget. So count bays. So bay number one is your target bay where you wanna park. So for example, this is bay. This is bay number one. So you are here. So you're going that way, yeah, like straight. So bay one, bay two, and bay three. Okay. When you are front of bay three, go a little bit forward. So you should be front of bay number three and bay number four. 3 and 4. So you should be like, for example, this is 4 and this is 3. You should be front of both of them. The white line between 3 and 4, should be in the middle of the door, your left door. That's it. Okay, stop there. What you need to do, you do full lock on the left. Simple. Okay, when you do the full lock on the left, do full observations, start moving. Okay, when you make a V shape of 45 degree, you must know what is 45 degree mean. When you are on a 45 degree, look over the right shoulder. Somebody might be coming from the right side. If nobody's coming, continue. If somebody's coming, stop. Make eye contact. If obviously if they don't move, they stop, you continue. Then you go to the 90 degree. Stop on 90 degree. Okay, that's it. Until 90 degree, don't do anything with your steering. If it's locked, keep it fully locked on the left. Keep coming, 90 degree. Okay, then what you need to do 1.5 turn. When you do 1.5 turn, your wheel will be straightened. Okay, and then you come back. You will be 100% in the bay. As long as you are in the bay, no matter you are more on one side than the other side, you are touching the line, or sometimes even you are on the line. If the car is straight, even if you are on the line, they still pass you with a minor mistake. Do not go for the correction. Worst come worst, if you done that and you ended up, your tire is crossing and going into the other bay, you always go straight, and if there's a bay straight ahead of you, okay, target that bay. Forget about the bay, you wanna go back. If the straight bay, front of you, the bay is straight front of you, go in that bay. Don't enter but come close to it. Just target that and target the middle of that bay. Okay, and then after that, put the reverse gear on, come back straight. Don't do anything with the steering, you will be fine. That's the method to do if there are bays opposite to each other available. If the bay is not available, someday what happens, examiner asks you to do in the bay where there's no bay available in front of you, to line up with that. Okay, no matter
You do exactly the same method, keep coming up to 90 degree, straighten your wheel, and then check on the side mirrors. If you can see the line, one of the line, okay, try to go close to that line. Only target one line. If your tire is about that much away from that line, the other line will be automatically adjusted. Why people make mistake? They look there, then they start adjusting this one, then they start adjusting this one, so then they mess up the whole thing. Target only one line, you'll be done. Hope I explained you very well here, because if you watch that video, yeah, try to do that way. First of all, watch that video, and I made that video particularly for those people who are struggling to count the lines. So I always teach the bay wise, okay, bay 1, bay 2, and bay 3. So bay number 1 is your target bay. So my YouTube channel is with same name, MK Driving Academy. And if you go in the playlist, you go in the maneuvers. I made all 4 maneuvers video. Okay, and I think it's one video, maybe 20-25 minutes long video. All 4 maneuvers in that one, or maybe separate videos as well for each parking, each maneuver. Thank you very much. Okay. Walaikum Assalam, Zach. Thank you very much. Hafiz Ghulam Mustafa. Thank you very much, Hafiz Sahab. Thank you very much. Hafiz Sahab, you are from Scotland. I am from Milton Keynes, my friend. मैं मिल्टन कीन्स से हूँ.
गुड लक हाफिज साहब, अगर आपने थ्योरी पास कर लिया तो प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू कर लें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेसन लेना शुरू कर लें। मैं मिल्टन कीन्स में लेसन देता हूँ जी, मिल्टन कीन्स में। हाँ जोनाथन, किदा फिट फैट? जी जी, क्या स्टोरी है? राइट। क्रिकेट का अपडेट या क्रिकेट का सीज़न ख़त्म हो रहा है। अभी हमने क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई किया है, वो हो रहा है, देखते हैं। सर यार मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ थोड़ी सी इसकी, जोनाथन मैं इसकी वो टिकटॉक में कोई काफ़ी सारी चीज़ों की मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसका सेट, चीज़ों को मुझे पता भी नहीं है ना, ये भी बड़ा रौला है ना, बड़ा चक्कर है।
सॉरी सादी आपने क्वेश्चन पूछा था क्या क्वेश्चन था सर आई हैव जस्ट पास माय थ्योरी टेस्ट व्हेन शुड आई बुक माय प्रैक्टिकल start taking lessons and once your test ready then you should go for the test anyway but you can book the test because test dates are not available you might find the test date in 6 months in advance so you better start taking lessons and book a test in advance and plan accordingly. Now you can't drive with your international license if you are in this country more than 1 year. You are allowed to drive in this country for 1 year. The day you land, it starts from that day. So if you're already here for 1 year, so you can't do on your international. But you can drive with on your provisional with a guy, with a person who has got 3 years old license, 3 years old UK license. नमस्ते नमस्ते सिद्धू नमस्ते किदा फिट फैट है No, you can't drive on your own with provisional license. Asya Zaman, you need to have somebody with you who has got 3 years UK license, 3 years old UK license to drive with your provisional. If you are in this country less than a year, you can drive on your international license until 1 year completes. It starts from the day you land in the country till the day is 1 year complete. Sorry, brother, nobody can get you a date for part two. You need to call to DVSA for the part two. Nobody on the planet can give you the date for part two. Don't pay money to anybody. There are so many scammers. I just landed here 2 months ago. Yes, Sadia. Then you can drive another 10 months. So you better buy a car soon as possible. If you have international license, fair enough. If you don't, ask someone from Pakistan or India or whichever country you are from and get your international license sorted soon as possible. Then drive it for like 5 6 months, whatever is remaining. And then after that, you go for the practical test. I live in Milton Keynes. Young soldier, I am from Milton Keynes. I can do lesson with you for the part two, no problem. But you better find a trainer who can train you for part three as well. I don't take anybody for part three at the moment. I'm busy with my learners, so I don't want to spend more time with the part three. You're welcome, Sadia. Asya, thank you very much for watching the videos. Thank you. Keep watching them, please, and keep sharing them as well. Young soldier, I don't work all day, my friend. I have got my own timings. I do few hours in the morning, and maybe sometime I do in the evening. I got other things to do. I'm a busy person myself. Wish you all in Manchester. Thank you very much. No, Manchester is too far. So you find somebody in Manchester. There are so many good instructors down that side as well. Okay.
What's the time now? Okay, guys, I'm gonna be here another 10 minutes. If you have any question, you can ask me. (10:14) or 10:41? 10:42. Okay. We'll get date for ADA part 2. Yes, you will get the date for part 2. You have to call to DVSA and they will put you on hold. And then after that, once the date is available, they will call you. You got to be ready for that and do the test. Nobody can get you the date for the part 2. चौधरी हमजा मान अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने एक वीक पहले थ्योरी टेस्ट पास किया है बट प्रैक्टिकल की डेट नहीं मिली। मेरे भाई, प्रैक्टिकल की डेट अगर आपने थ्योरी पास किया है अभी, तो प्रैक्टिकल की डेट जो भी मिल रही है वो ले लें। मंडे मॉर्निंग को उठें, डेट्स रिलीज होती हैं, जो भी डेट मिले वो ले लें, फिर उनको चेक करते रहें और कुछ ना कुछ आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन जो भी मिल रहा है उसको वक्त ले लें। प्रैक्टिकल की डेट कैसे मिलेगी? मंडे को मॉर्निंग 6 बजे उठें और हर रोज़ तकरीबन 6 बजे उठें। नेक्स्ट वीक अगर पूरा आप ट्राई करेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी। डेटों का बहुत बड़ा फड्डा है, तो डेटें नहीं मिल रही। ओके, तो डेट के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर लें, डेट बुक करवाएं और प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू करें। अच्छे से लेसन लें और एक ही गो में पास करें। लेसन अच्छे लेने पड़ेंगे, फेल होगे तो फिर आपको 200-300 पाउंड की पक्की पड़ जाएगी। There is no solution. You have to keep checking. Otherwise, you have to pay money to the people, and there are so many scammers around as well. If there's a genuine person, pay money and buy it. If you don't do that then. Don't pay money to random people. How can you improve your reverse steering? By doing practice, and practice, more and more practice. If you're struggling for reversing and you don't know which direction you are going to, obviously then you need more time for that. Okay, so ask your instructor, or if you're doing practice by yourself with your family member, tell them you need more practice on that. You might be good on driving straight, but you might have a bit of issue to do reverse. Okay, so you need to do more practice. That's the only way forward. And think yourself. Tell your instructor, don't intervene. Okay, tell them you keep quiet, I'll do myself. As long as I'm not doing anything dangerous, I'm not gonna hit anything. Does military do area part 2? Yes, they do area part 2 in military as well. Yeah, so do yourself and think. If you are turning left, why the car is going right side? If you are turning right, why the car is going left side? How can the car go left side? Which side of turn I do, the car will go on the left side. Which side I do turn steering, the car will go on the right side. So if you're gonna think of yourself, then it will improve. It takes time. सादिया जी, अगर आपका फ्रेंड अगर आपको ये बात बता रहा है और मैं अप्रूव्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको बात बता रहा हूँ, तो आप उसकी मान रही हैं और मेरी नहीं मान रही हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? Is the test route hard for the PDF part? No, my friend, they are the simple routes. No hard. Nothing is hard as long as you know what you're doing. Part 2, they take you on the motorway. Well, they might do that, but not in Milton Keynes. I never heard they take you on a motorway, but if they do, they can. That's their choice. So if you want to become a driving instructor,
there should be no problem you to go on a motorway. If you have a problem, then you need to take lesson. Learn how to drive on the motorway then. All right, what's the time now? Yes, my friend, I am. प्रोविजन लाइसेंस पे लोन ड्राइविंग नहीं कर सकते जब तक कोई साथ ना बैठा हो. इज दैट ट्रू सर? यस, 100% ट्रू. प्रोविजनल पे ऊपर अगर आप गाड़ी खुद चला सकते हो तो फिर प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत क्या पेश आ गई, मुझे ये बताएं पहली बात. ठीक है, प्रोविजनल इज आरजी. प्रोविजनल मीन आरजी, टेम्परेरी. Okay, so you can't drive on your own with a provisional license. You can drive on your own with international license as long as you are in this country less than a year. If you are more than a year living in this country, you can't drive on international license as well. People do that, they get caught and they got banned, they got suspended, they got fined. So many things are happening. But is there any chance if someone is already a good driver and he can pass practical taking 2 to 3 class? Hamza, yes, there are people who never took any lesson, they pass the test. Okay, but as long as they know what they are doing, there are videos available on YouTube, TikTok, watch them, practice by yourself, and go for the test. You might pass it. Yes, I wouldn't recommend you that because currently there are so many, the failing rate is quite high, and to find a date is a big problem as well, and it is very expensive. I mean, it costs you about 200-300 pound to find a date, and if you fail that, it's going to cost you 600-700 pound. So you better take few lesson. I would say probably around 10 hours minimum, and then go for the test. You should pass the test. Wrong observation, minor or major, serious mistake, 100% failure. How can I focus on my theory because I have, and it's really boring. Yes, 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 it is. Keep doing 10 questions. Me huck. Keep doing 10 questions every day. Okay, there are about 700 something questions. Okay, 10 to 20. As long as you are not bored, keep doing until you feel boring. Okay, then stop it. Okay, so I would recommend you 10 to 20 questions a day. Yeah, so if you do like a month, 2 months preparation, you will be done, and then you do few mock tests as well. Theory is a bit of boring subject, yes. But once you go for the practical, you will enjoy it driving around. Yeah, inshallah. If you have a question, if it's a legit question, you can ask me. I have got few more minutes to go. Okay, so the requirement is the person who is going to teach you should have a UK license for 3 or more than 3 years. That's the first requirement. The car should be roadworthy, it should be insured as well. Okay, insured on your name as well. I mean, your name should be added in that insurance. Okay, and you should have 2 L plates, one front of the car, one back of the car. Okay, and then you can start learning with your friends, family member. No problem whatsoever. अगर आप इंस्ट्रक्टर के साथ
लेसन पे हैं और रेड लाइट्स क्रॉस कर जाते हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एनीवे, द ड्राइवर विल बी रिस्पॉन्सिबल, but there's a loophole because it's instructor's available responsibility as well. So technically speaking, instructor should pay for that because he should keep an eye on. That's why you are with instructor. So legally, obviously, the fine will go to you, yeah, but instructor should pay. It happened to me once. One guy, there was an average speed limit, and we were talking. He was driving, I was talking, and the fine came up, okay, and then I took the responsibility and I paid for that. No need of dual control car, my friend. रॉन्ग लेन में चले जाने से मेजर नहीं होती, एज लॉन्ग एज यू डोंट वायलेट द रूल. You welcome Get Fit with Rimpy. Yeah, so if it happened to you, ask your instructor, can you please pay, sir? So instructor should pay, but if instructor doesn't pay, you go for half and half. You pay half, instructor should pay half as well. But I would say, technically speaking, instructor should pay because it's his fault as well. His or her, whoever is the instructor. Okay, first I took 5 manual lessons. Now I was thinking to start automatic. What's your advice, please? If you done only 5 lessons on manual and you are struggling with your clutch control, you better off go for £240 for jumping the red light. Are you sure? To be honest, I'm not sure about it. I need to check how much is for the jumping the red light. How come it's £240? No. If it is 3 points, you should go and you should challenge that. You shouldn't accept it. No. That's not acceptable. Oh. Now you challenge that. Call to the DVSA. If he done that, okay, because those 3 points will stay on your license, okay, and you will be, obviously, I mean, I don't know use the word here, but you call to DVSA, all right, it's not DVSA, DVLA, all right, call to the DVLA, explain them the situation, and they will advise you. If you have 6 points on your license in next 2 years, even if you pass your test, it will be a big problem for you. And paying £240, nah, it's not acceptable. Why you are with instructor then? If you are going to pay the fines, then maybe 40, 50, 70 pounds is not a big deal. As I said, same thing happened to me once, long time ago. There was an average speed camera. We didn't check it. There was a new average speed camera. There were 2 speed cameras, and we were supposed to do 30, and we were doing 34. And we were talking, and I was thinking maybe he's doing fine. He was a good driver. At the end, yes, you paid, but if you paid, call to DVLA. All right, I wouldn't suggest you just keep quiet on that because money is not the issue. £240 is not the problem. The problem is 3 points on your license. Okay. So what happened is we received a letter. Okay, obviously letter came to my house because the car was registered on my name. They asked me who was the driver, and I told them he was the driver. I was teacher because they got the camera. Okay, and obviously nowadays your picture come up as well, driver and the passenger side as well. So obviously I was sitting on the passenger side, and I cannot basically say that I was driver at that time because I had to tell them the truth. Yes, they were the driver. I was teaching. I was on the lesson. Okay, and I accepted the responsibility. And then obviously they given me the course for that. I know I'll do that course myself. I'll teach myself, but it was my fault. I mean, I shouldn't tell this thing on live broadcast, but it happened. And we are human beings. We make mistakes. That's why your instructor made a mistake. Okay, but now you shouldn't pay for that. I wouldn't go for that. I mean, money wise, I'm not really bothered, but the points is a big problem. Yes, you can call Rimpy, call them, call to DVLA. There's a number available on the website. Call them, speak to them, tell them this is what happened. You was on the lesson, okay? And if you have proof, then you can prove that you was on the lesson, okay? Which the car was registered and everything. And if it's a genuine instructor, yeah, then they will give you
good advice. Yeah. Yes, of course, if you have already paid, doesn't really matter. You can always get the refund. Tell them you was not sure about it, and obviously your instructor used your details and everything, but it's not my fault because I was learning. It was the instructor's duty. It was his job to control the situation. If he was doing more, if he was doing speeding, what that instructor was doing at that time? If you jumping the red light, what he was doing? Explain them the situation, and they will help you. Do you understand, Rimpi? What I'm trying to tell you? Yes, if he was on the phone, there is evidence. They will trace his phone. Okay? Because you are learning. If you are a good driver, why would you be with the instructor? Why are you paying money to them? Come on. You should know this yourself. Just call them tomorrow. Don't tell your instructor about it. Okay? And just call them tomorrow. Call to DVLA. Tell them the situation. This is what happened. And they will give you advice. I mean, £240 on top of that, 3 points on your license. Not good. Yeah. If you get another 3 points on your license next 2 years, you will lose your license. Even if you pass the test. Instructor should go for the, what do you call, a course. Sometimes, the DVLA and the police authority or these authorities, they offer you a course. But it was easy for him, and they just put your name in. Oh, gosh. All right. Couple of more minutes, guys. And that's it. And I'm gone. हाँ, प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर पॉइंट्स लगते हैं ना, उसके प्रोविजनल के ऊपर ही लगे हैं ना पॉइंट्स. वो प्रोविजनल के ऊपर प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर पॉइंट्स लगेंगे तो वो कैरी होते हैं ना. मतलब इंस्ट्रक्टर फ़ोन पे लगा हुआ है और स्टूडेंट बेचारे के जो है ना पॉइंट्स लगवा बैठा, और स्टूडेंट को ही पैसे पे करने पड़े. Yes, Chaudhary, you can get your license after that, but another one more point on your license, your practical, your full license will be revoked. So maximum 6 points आप कैरी कर सकते हो. इससे ज़्यादा होंगे तो फिर आपका प्रैक्टिकल जो आपने पास किया, फुल लाइसेंस होगा, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम होगा. I want to learn left-hand drive, uncle. Why not you are learning then? Start learning. I'm not sure about do they do the left-hand test in UK? Yes, we drive on the left-hand side, but we drive on the right basically. I mean, the driver seat on the right side. Adil Javed, business is good, my friend.
मोहम्मद दानिश, मैं आपसे दूर हूँ यार, आप वहाँ लोगों को इंस्ट्रक्टर ढूंढे, मैं मिल्टन किंग्स में होता हूँ। या ओके सो ठीक है यार, सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो लाइव देखी है। ये लाइव ब्रॉडकास्ट आज हमने की काफ़ी दिनों के बाद। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिनों में भी कल या परसों तक फिर आऊँ। आज काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। Thanks Anmol for the sharing and double tapping. Anyone who ever been double tapping, thank you very much. जिन जिन बंदों ने डबल टैप किया शुक्रिया। ओके ओके गाइस, बाय बाय एंड यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़।